Hello, everyone, and I'm very happy to have with me proud Damsonian Dr. Neelika Gupta, Thank you, ma'am. and she's secured a rank 36 in November AIIMS 2019 postgraduate examination. Heartiest congratulations, Thank you, Bache. ma'am. Thank you. And it's a pleasure to have you here. Thank you, ma'am. And Neelika has been a regular batch student, and then she's also done a test and discussion course this year with us, right? And हम लोग Neelika, we would definitely want to know what was your strategy to get an amazing rank 36 in the AIIMS exam, right? So Neelika, let's start, and let me ask you first that what do you think was the most important thing to start your preparation for this kind of an exam? Ma'am, I started very early. Matlab, Okay. I was not knowing that I would crack AIIMS someday, but I started with first year. I read the standard books. Matlab, like first year, second year subjects were my favorite. So not because of cracking AIIMS, but I liked them to study. And then I continued same in minors, and I kept my basics strong. In any case, in the exam, if we forget what we have marked up, but the basics would if you know the basics, you can do the questions. Right. And do So you that think was that my the aim. classes that you were doing side by Yes, side ma'am. help you in integrated learning and concept building? Yes, ma'am. In minors, I did DAMS coaching live, so that was very helpful. Okay. It guided me. All of the teachers, Anupma ma'am, you, Sumer sir, all gave me a direction, because in my college there was, I was not getting that thing, which DAMS gave me. So it's Right. very good. So you could sort of make your handwritten notes, right? Yeah, And ma'am, of every subject, and I kept revising it, in minors and majors and whatever time I got, because it was easy Right. to revise those. One copy is easy to revise, especially if it is written by you. Yes. Yes, ma'am. And then I want to ask you ki uh, once you kept going forward, kyunki you started early and you Yes, made ma'am. your handwritten notes, was it always easier to go back to them and sort Yes, of ma'am, read them over definitely. and over again? Definitely, ma'am. And as much as the many times you read, you will get more and more things from the same notes. Every time you read, you will get some additional points that you might have missed out in the first go. That's So right. repeating the same notes, it's very good, and even if in exam you forget things, but it will strike you if you have repeated it many times. So राइट सो अब हम शुरू करते हैं कि इस साल जब हमने टेस्ट एंड डिस्कशन कोर्स ज्वाइन Yes, किया ma'am. Yes, ma'am. सो तब हमारी स्ट्रैटेजी क्या थी? लेट्स से इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर हमारी स्ट्रैटेजी हमने कैसे शुरुआत Yes, किया? ma'am. I started it in April, 2019. So Yeah. every month every week there was a subject. So I tried to cover it. The small subjects take only 2 to 3 days, so I didn't give the whole week to them. Okay. I tried to cover one more subject in it if it is small, but Okay. majority I tried to do the subject, whether it was big or small, within that period. And if I had extra time, I also included other subjects in it. Okay. And I tried to score good, in the TND session, and all the updates and everything that was left out in my previous notes Yes. got covered in this, so I don't have to do research or anything sort of it. Everything was in my notes, and it Right. was added in the TND. All the thing that I had to do was to simply revise my notes and give the subject wise test and the grand test that I gave every month. Okay. So it was very good. Okay, some of the juniors and colleagues would want to know कि कोई subject wise आपकी कोई strategy है, जैसे कि let's say final year subjects कैसे पढ़ने हैं, या Yes, ma'am. mediocre level subjects जो हैं, मतलब Yes, जो ma'am. बहुत छोटे भी नहीं हैं and बहुत बड़े भी नहीं हैं, Yes, ma'am. उनको कैसे पढ़ना है और short को कैसे पढ़ना है? Any subject wise strategy that you want to comment on? मैम, मेरे कुछ सब्जेक्ट्स जैसे फिजियो, फार्मा, पैथ, ये मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग थे. तो मुझे Okay. लगता है अगर ये बेस सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हैं तो आप मेडिसिन, सर्जरी, इवन पीड्स के भी काफ़ी क्वेश्चंस कर सकते हो, बिकॉज Okay. पैथ में भी आप न्यूप्लेजिया पढ़ते हो, आप जीन्स पढ़ते हो, वही Right. चीज़ें आप सर्जरी में पढ़ते हो, वही चीज़ें आप मेडिसिन में पढ़ोगे. तो That's अगर right. आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हैं तो वो चीज़ें बहुत हेल्प करती है. तो मेरा फोकस यही था कि मेरे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सारे सब्जेक्ट्स काफ़ी अच्छे से हों. Okay. और उसके बाद वो चीज़ें मेडिसिन वगैरह मुझे काफ़ी हेल्प किया, क्योंकि जब बेसिक्स पता है तो आप उसमें चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो. उसमें कुछ क्राइटेरिया एक्स्ट्रा होंगे मेडिसिन में, या Okay. सर्जरी में कुछ टीचर्स हेल्प कर देते हैं, कुछ नई सर्जरीज हैं. तो वही कि अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हैं तो आपके लिए चीज़ें बहुत स्मूथ हैं. Okay. और Yes, इसमें ma'am. आई वुड वांट टू आस्क यू, डिड यू फॉलो ma'am. द टेस्ट शेड्यूल? मतलब जो शेड्यूल दिया जाता था आप उसको फॉलो करते थे? Yes, ma'am, definitely. I Okay. tried to follow the schedule, because if I would have followed, then the subjects would have been completed by August or by September. Right.
by following the मतलब same schedule that DAMS yes. provided. Yes, ma'am. एंड यू नो ऑल्सो आई वुड लाइक टू आस्क, आप कुछ बता रहे थे कि आप सब्जेक्ट्स को क्लब करके पढ़ने की कोशिश करते थे. जी मैम. सो येस, व्हाट वुड बी योर सजेशन फॉर स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग टू यू हु वुड आल्सो बी डूइंग अ टेस्ट एंड डिस्कशन कोर्स, लेट्स से दिस ईयर नाउ. सो how can they combine and how can they study 2 or 3 subjects in a week, for example? मैम मतलब अगर मुझे लाइक एक सब्जेक्ट एक वीक में अगर 2-3 सब्जेक्ट्स करने होते थे तो मैं शॉर्ट सब्जेक्ट्स लेती थी, जैसे ENT कैन बी कवर्ड इन 2 days, ऑप्थाल्म कैन बी कवर्ड इन 1 or 2 days, मतलब डेफिनेटली. सो सच सब्जेक्ट्स, बट आई नो दैट सर्जरी लाइक सब्जेक्ट्स लाइक सर्जरी टेक 4 to 5 days. सो मतलब तो those subjects I gave मतलब complete week because they deserve that in the initial days. जैसे in April or May I had time, but when September वगैरह September started, then मतलब the test and discussion course got over, and then मतलब it was easier to revise according to your मतलब own plan after the test and discussion was over. So if we can put it like that, you used to club a major and a minor. Yes ma'am, mostly. दो बड़े subjects को आप yes club ma'am, कर रहे yes हो. ma'am, yes ma'am. Right. And also यहाँ पे I would like to ask, जो बच्चों का doubt रहता है when they are doing a test and discussion course. For example, you've reached May and you are giving a subject test. How would you plan your revision for a subject that happened in January or something like that? Ma'am, for a subject that I had done in January, it will definitely take less time than it had taken in January. So, मतलब if suppose मतलब I'm not getting to do the things, मतलब I'm confused. हाँ, सो फॉर एग्जाम्पल अगर पुराना कोई सब्जेक्ट रिवाइज करना है तो उसको कोई अलग से आवर्स डेडिकेट करते थे आप? नहीं मैम, मतलब टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही था वो. जैसे अगर कभी मूड स्विंग्स हुए या नहीं हुआ तो 5 सब्जेक्ट रिवाइज करना ज़्यादा इजी था. सो दैट इज़ वाई कि नए सब्जेक्ट अगर टाइम ले रहे हैं तो 5 सब्जेक्ट किया मैंने, ऐसे ही बस. ग्रेट. और एक और चीज़ आपकी स्ट्रैटेजी में जानना चाहूँगी, एक जो वीक है उसमें वर यू प्राइमरली रिलाइंग ऑन नोट्स, आपने बोला आप करते रहते थे, एंड कितना टाइम आप क्वेश्चंस को डेडिकेट करते थे? मैम अगर लाइक 12 आवर्स मैंने पढ़े होंगे तो उसमें 3 to 4 आवर्स MCQs ही थे, जिसमें मैं ट्राई करती, मैंने एंड में एक स्ट्रैटेजी बनाई थी कि मैं डेली ग्रैंड टेस्ट दूं. तो उससे ये होता था कि जब मैं MCQs के लिए प्लान करती थी, कई बार दिन में मैं MCQs नहीं कर पाती थी और वो चीज़ें छूट जाती थी. तो फिर मैंने सोचा, मैंने डैम्स के ग्रैंड टेस्ट से ही स्टार्ट किया था. मैंने लाइक सितंबर में हर दिन मैं एक ग्रैंड टेस्ट देती थी, तो उससे ये होता था कि मेरे 3 घंटे जा रहे हैं, पुराना ही क्यों या मैम, बट वो चीज़ें रिफ्लेक्स में आती है. आप ग्रैंड टेस्ट से लाइक एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना और एक ग्रैंड टेस्ट देना बहुत डिफरेंट है. तो मैं मतलब जैसे मेरे 4-5 घंटे जाते थे, मैं एंड में मतलब 8 से 11 में ग्रैंड टेस्ट देती थी, उसके बाद उसका 2 घंटे का डिस्कशन भी देखती थी. बट उससे ये चीज़ें होती थी कि जो भी मैंने जैन में पढ़ा है या फेब में पढ़ा है, मैं सब चीज़ों को रिकॉल कर पा रही थी. So this is exactly what I was asking. So this was the way of your passive revision, right? Yes, listening to the video, to the video and going through the test and going through the solutions. Yes ma'am. That's great. And also, how important do you think is to inculcate the habit of giving grant tests right from the beginning? It is very important ma'am, because मतलब grant test should be given on the first day you begin your preparation, because by that you will know मतलब where you stand and how much you have to go. Initially my rank was very poor last year, मतलब it was somewhere in thousands, then it started improving in hundreds, and then eventually in the last days I was like I came in 50s, मतलब so it was like it gave you confidence. Yes और आप देखो कितना रिफ्लेक्टिव है. आप अगर बोल रहे GT की रैंक आपकी 50 में आ रही थी, तो यहाँ भी आपकी yes ma'am, definitely it is very close to what you have been getting. Yes ma'am. Right, because the number of students giving the grant test is very large, so it's quite reflective. Yes ma'am. And do you think that the video solutions that we give with SWTs and GTs should be incorporated? Are they high yielding? And yes ma'am. and आप कैसे उसमें टाइम डिवोट करते थे? मैम अगर सोल्यूशन देखें तो सोल्यूशन में कभी हम ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन पर स्टक हो गए, हमें कुछ क्वेश्चंस डैम्स जीटी में बहुत अच्छे होते हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि आप लाइक सोल्यूशंस में आप सोच रह जाते हो क्या है, बट जब आप वीडियो देखते हो तो वही चीज़ आप जल्दी कर लेते हो. टीचर्स मतलब समझा देते हैं आपको. यस मैम, प्लस एक्स्ट्रा पॉइंट्स आल्सो दे ऐड, मतलब इट्स नॉट ओनली जस्ट द क्वेश्चन बट ऑल एक्स्ट्रा पॉइंट्स दैट they need to cover, they tell in the video. Right. Yes ma'am. Great. Okay. And अब आप मुझे बताओ बेटा कि आप TND का schedule follow करते रहे. Yes ma'am. And you know you finished your TND. Yes ma'am. And then उसके बाद आपने अपनी रिविजन के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाई? मतलब मुझे ये था कि मतलब रिविजन ऐसा नहीं चाहिए था कि रिविजन लाइक 15 डेज में एक रिविजन हो गया या लाइक बहुत जल्दी रिवीजन करने का, बट मेरा ये था कि मैं जो भी रिवाइज करूँ वो बहुत अच्छा हो, ताकि उसमें से जो क्वेश्चंस आए वो मेरे एक भी ना छूटें. सो मेरा हार्डली एक रिवीजन अच्छा था, और लाइक हाफ रिवीजन ही मैं कर पाई थी एम्स के पहले भी, बट मेरे जो रिविजन्स थे वो बहुत अच्छे थे. तो मैंने हर सब्जेक्ट को टाइम दिया, स्पेशली एम्स को फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो वो मेरे मेन कॉम्पोनेंट थे. जैसे
बस यही, और मेरा ये था कि आप टाइम दो, वो सब्जेक्ट्स अगर टाइम ले रहे हैं तो वो उतना रिवॉर्ड भी दे रहे हैं। जैसे अगर आपकी फिजियो फार्मा पैथ क्लियर है और आप उनको टाइम दे रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, तो वो आपको कहीं ना कहीं मतलब देते हैं, क्योंकि एम्स में लाइक इस बार वो ने बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट की थी चीज़ें, जैसे 2-3 सब्जेक्ट्स इंटीग्रेटेड थे, तो जो लोग बस रट के जाएंगे या मगअप करके जाएंगे वो नहीं कर पाएंगे, वो पहले ही फिल्टर आउट हो जाएंगे। तो जब तक आपके कंसेप्ट नहीं क्लियर है, आप उनको रिलेट नहीं कर पाओगे चीज़ों को, तो फिर एम्स क्वालिफाइड मतलब मुझे लगता है डिफिकल्ट होगा। नहीं, दैट्स राइट, क्योंकि अभी द पैटर्न इज नॉट चेंजिंग, यस मैम, इट हैज टू बी इंटीग्रेटेड टीचिंग एंड इट हैज टू बी एप्लीकेशन बेस्ड टीचिंग। ठीक है, अब मुझे ये भी बताओ कि बच्चों को ये भी नहीं समझ में आता है कि जब आप रिविजन शुरू करते हो, should it take the same amount of time as you did in the first reading, या you think the successive time should keep reducing? Ma'am, it always keeps reducing because the more number of times you revise, it definitely takes lesser time, and matlab eventually there's a time when you can do medicine in 2 days. Such a vast subject can be completed even in 1 and 2 days. Depends on the number of revisions you do. Great. So इसमें मैं I will ask you like a student. Yes, Let's say I am another student who okay, wants to crack exam like you. तो Yes, मुझे yes, आपसे ma'am. जानना है कि मेडिसिन तो मैम नीलिका इतना बड़ा सब्जेक्ट है, हम Yes, उसको ma'am. कैसे 2 दिन में कैसे रिवाइज करना है? Ma'am, the first तो time I हम read क्या medicine. गोल रखते थे अपना Yes, ma'am. रिविजन का? मैम फर्स्ट टाइम जब मैंने रिवाइज किया था, जैसे पहले ऐसा होता था कि एक पूरा यूनिट, जैसे सीवीएस भी एक दिन लेता था, लेकिन जब आप कंसेप्ट्स बना लोगे, आपको पता रहेगा कि कौन सी पल्स कब दिखती है, जेवीपी की वेव्स क्या होती है, जब आप एक चीज समझ जाओगे तो फिर वो चीज आप जब सेकंड टाइम पढ़ोगे तो वो डेफिनेटली हाफ डे लेगा उसको। आप and you can skip through those यस मैम, parts. वो स्किप हो सकते हैं क्योंकि वो रिफ्लेक्स में आ जाते हैं जितनी बार आप उनको पढ़ते हो। Right, Yes, ma'am. wonderful, that's great. And then also I will also like to ask कि सितंबर के बाद आपकी जीटी की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई थी? यस मैम, डेफिनेटली। पहले मैं 15 डेज पे देती थी, फिर वीक में, फिर मैंने डेली भी देना शुरू कर दिया था एंड में, जबकि वो बहुत ही ऐसा था, मुझे नहीं पता था मैं सही करूंगी या नहीं, क्योंकि बहुत क्रूशियल टाइम हो जाता है अगर आप एम्स के लिए पर डे हो, और आप मैंने अक्टूबर में हर दिन मतलब ऑलमोस्ट हर दिन एक ग्रांड टेस्ट दिया है ऑल्टरनेट डे, तो उसमें मेरे 4 to 5 आवर्स आराम से जाते थे, क्योंकि आप 3 आवर्स कंसंट्रेट कर रहे हो। उससे ये भी हुआ कि जैसे 3 आवर्स एग्जाम में बैठना, जब मैंने फर्स्ट टाइम सीबीटी या कुछ दिया था तो मुझे वो 3 आवर्स बैठना भी बहुत हेक्टिक लग रहा था। मुझे लग रहा था कि लाइक लास्ट में बस यस मैम कि बस बैठे हुए हो। यस मैम, बट जब मैंने इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, मुझे नहीं पता था इसका रिजल्ट क्या होगा, बट जब आपने बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो एम्स का, जैसे सपोज मैंने 40 ग्रांड टेस्ट दिए होंगे, मेरा अप्रोच थोड़ा अलग था, तो एम्स मुझे ऐसा लगा ही नहीं, जबकि मैं उसके लिए पढ़ी थी, मुझे लगा ये 41st ग्रांड टेस्ट है मेरा, तो इट्स नॉट अ बिग डील। ये चीज़ें बहुत रिफ्लेक्स में थी। मुझे लगता है बहुत सारे आंसर्स उससे यस मैम, रिफ्लेक्स में काफी चीजें हो जाती है। तो मेरा एम्स का पेपर भी 10 मिनट पहले हो गया था, मैं देख रही थी कि मेरा जल्दी हो कैसे गया। That's great. So अगर कुछ बच्चे जिनको टाइम मैनेजमेंट इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज it really is, especially PGI exam and in the new pattern AIIMS exam where the number of questions has increased but the time duration is 3 hours. It's very very crucial that you know how to do the time management, because you know नहीं तो बाद में आके वो जो regret होता है that you could not even see Yes, let's ma'am. say 10-15 questions. Yes, ma'am. Is not nice, because maybe they were very doable questions, but just because you were short of time आप उन तक नहीं पहुंच पाए, right? So I think that's something very nice that she is stressing on, that if you keep giving these grand tests, the real exam feels like just another grand test. Yes, and you yes, know that helps a lot in the exam mind गेम जो होता है एग्जाम के, वो 3 घंटे का, वो बहुत हेल्पफुल रहता है उस दौरान में, राइट? एंड नाउ आई विल मूव फर्दर ऑन। लेट्स से 1 महीना बचा है, सो फॉर एग्जांपल हमारे बहुत सारे बच्चे हैं हु वुड बी प्रिपेयरिंग फॉर नीट एंड यू नो अपकमिंग एग्जाम। सो 1 महीने में हम आपने क्या अपना स्ट्रैटेजी रखा फॉर द लास्ट मंथ बिफोर द एम्स एग्जाम? मतलब इट वाज लाइक कि शॉर्ट सब्जेक्ट्स मैंने थॉरो किए थे, क्योंकि शॉर्ट सब्जेक्ट्स कम टाइम लेते हैं और वो हाई यील्डिंग भी होते हैं, उसमें से क्वेश्चंस आने हैं और वो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली। तो शॉर्ट सब्जेक्ट्स मतलब फर्स्ट गो में थे, और फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स थे, क्योंकि मुझे पता था एम्स उन पे ज़्यादा फोकस करता है, तो बस यही था मैम। और फिर डैम्स डीवीटी के वीडियोस थे, तो वो चीज़ें मैंने मतलब कई बार देखी थी, क्योंकि मुझे पता था कि एम्स में इमेजेस ज़्यादा पूछते हैं। फिर डैम्स का वीडियो बेस्ड टेस्ट था, वो भी बहुत हेल्पफुल था, क्योंकि मतलब आप जितना वीडियो आए हुए थे। यस मैम, तो वही कि आप जितना मॉक, जितने क्वेश्चन, जितनी चीज़ें करते हो, वो चीज़ें रिफ्लेक्स में आती है, क्योंकि बहुत बच्चों को आता है मतलब, लेकिन वही कि एग्जाम में परफॉर्म करना, उस क्वेश्चन को देख के तुरंत आंसर करना, वो टाइम सेव करता है आपका, और वो टेस्ट से ही आएगा। और वो टाइम आप किसी और एमसीक्यू में किसी और को जो एक्चुअल में वर्थ है। यस मैम, कंफ्यूज्ड इनटू ऑप्शंस। यस मैम, यस मैम। एंड डिड यू यूज द एम्स कैप्सूल? यस मैम, इन द लास्ट 1 वीक आई डिड एम्स कैप्सूल एंड इमरजेंसी मेडिसिन, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, एंड बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस भी थे, क्योंकि लास्ट वीक में ऐसे कई चीज़ें
होती है जो हम नहीं टच कर पाते हाँ हैं, जी। बट एम्स कैप्सूल में हर सब्जेक्ट में वैसी चीज़ें थी जो टीचर्स ने एनालाइज की थी कि हाँ मतलब ये इंपॉर्टेंट है, उनने हर उस टॉपिक को टच किया था, उसमें से मैक्सिमम पॉसिबल MCQs उनने बताए थे विद इन 1 आवर, तो वो बहुत ज़्यादा हाई यील्डिंग था और मतलब काफ़ी क्वेश्चंस डायरेक्ट भी थे और मतलब बहुत अच्छा था मतलब। क्योंकि Yes, आई ma'am. थिंक कि क्लोज टू एग्जाम आपको वो शॉर्ट वीडियोस, छोटे Yes, ma'am. छोटे Yes, ma'am. डिस्कशंस जो सिर्फ बम्बार्ड कर रहे हो विद हाई यील्डिंग इन्फॉर्मेशन, Yes, ma'am. which is Definitely. what is the concept if we ever do anything video based, that Yes, it ma'am. has to be like short videos which Yes, are ma'am. going to be very high yielding, so Yes, that you know you can do 19 subjects In a in a short shorter while. Yes, span. ma'am. नहीं Yes, तो ma'am. हमारे पास Definitely. इतना टाइम नहीं है कि कि एक कुछ एक सब्जेक्ट्स छूट जाते हैं। Yes, ma'am. Exactly. Yes, ma'am. राइट एंड अब मैं अगर आपसे पूछूं कि नो डाउट आपने अर्ली स्टार्ट किया विच गिव यू एन एडवांटेज, आपने बहुत नोट्स बनाए, टेस्टिंग करा, Yes, ma'am. बट मुझे अब जानना है कि हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक इज द रिविजन फॉर द एग्जाम? मैम वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब रिवीजन इज द की। अगर आपने रिवाइज नहीं किया, आपने फर्स्ट टाइम बहुत थोड़ा पढ़ा है बट आप सेकेंड टाइम रिवाइज नहीं कर रहे, इट्स इक्विवेलेंट कि आपने पढ़ा ही नहीं है। तो वही है कि रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वही नोट्स आप रिवाइज करोगे तो वो चीज़ें आपके रिफ्लेक्स में आएंगी। That's सो right. बहुत वास्ट नहीं जाना चाहिए, मतलब मुझे ये लगता है this कि is what I really want to Ye- ask. yes, Is ma'am. it, because that's the dilemma बच्चों Yes, के ma'am. mind में, Yes, is it, yes, ma'am, is it, definitely. do you think it is worthwhile to have n number of hours of No, things, no, ma'am, definitely but not able to finish it even once? Forget about a revision program. No, ma'am, it's definitely not rewarding. मतलब it's better to stick to your notes and revise it multiple times. I did the class course, so I had notes of every subject, Right. and all the updates were added in the TND. So मतलब I didn't have to do any research or anything. मतलब हाँ जी. everything was with me, and the only thing I had to do was multiple revisions, and that was the thing. मतलब एम्स में भी ऐसा है कि बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पूछते हो, अगर हाँ वो जी. पूछेंगे भी तो वो किसी को नहीं आ रही होती है, तो ऐसा नहीं कि बस आपको ही नहीं आ रही होती है। तो बट वही है कि बेसिक्स ज़्यादा रहते हैं तो अच्छा है, मतलब रिविजन तो मस्ट है। Right. It's And a another better. thing that I would definitely want to ask a Yes, ma'am. topper, because you know ये सब चीज़ें हैं जो बाकी बच्चों के भी दिमाग में रहती हैं कि ऐसा ma'am. क्या करें कि हमने लिखा जैसी अच्छी रैंक लाएं। राइट, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं, आप हाउ मच वर यू रनिंग अराउंड अपडेट्स? Collecting new stuff No, close ma'am, to the मतलब exam. not at all. मतलब I don't think I have even spent half hour on collecting updates or in controversies, because Okay. hardly there is like 1 or 2 question on controversy, and that will not affect your rank. Yes. So, ma'am, and whatever is important is covered in the test and discussion in Yes. videos. So I didn't have to do any research. The only thing was to stick to your notes and Right. keep revising and give the grand test. So if there was any update, it was covered in the grand test, any one line or anything. And ma'am, in the DAMS DVT also, matlab, the new things, the new stages were also covered. So matlab, I didn't have to do any research on, especially I didn't even spend half an hour on searching anything new or spending time on the controversies. Right, Yes, ma'am. great. And now, you know, I would really want to ask you, Bache, ki, what do you think would be the most important ingredients to get a good rank in prestigious institutes like AIIMS? Revision, hard work, और मैम डिवोशन। मतलब इट्स लाइक कि देयर वर टाइम्स व्हेन मतलब मैंने नहीं पढ़ा या कुछ भी, बट ये कि मतलब लाइक आप कोई भी दिन पूरा वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो लाइक मतलब इवन इन अ डे अगर आपका मन नहीं है तो आप वीडियोस देख सकते हो। हाँ जी. मतलब इट्स लाइक कि वो फ्रूटफुल होते हैं, मतलब आप पूरा दिन वेस्ट कर रहे हो तो इससे अच्छा तो बस वही हार्ड वर्क एंड कांस्टेंट Persistence. स्टडी। यस मैम। Great. And anything motivating that you would want to say to your juniors or your colleagues who are listening out to you, or बस anybody you want to personally thank on Yes, this day? yes, ma'am. My parents, because last year I got BRD gynae, so they were Yes. the one who relied on me, who said that yeah, you can Give it matlab, another try. give another try. Yes, ma'am. And yes, I have proved them right. So I want to thank my mom and dad who trusted me and matlab, said that I can matlab, Yes, give that's myself very one more important. chance. You need Yes, that ma'am. little push. Yes, you ma'am. know, Definitely. That you should try your limits. You should challenge yourself. Yes, right? ma'am. Yes, ma'am. That's great. And what branch do you want to pursue, beta? Ma'am, mostly I'll take derma, Okay. matlab dermatology, and I'll do matlab mostly dermatology. Great, great. Thank I you. wish you all the very best for Thank a you, bright ma'am. future ahead. Thank you. And thank you so much for coming here. It was a pleasure talking with you. Thank you so much, ma'am. Thank you.